Hello everyone. Today we are going to discuss Kohlberg's theory of moral development, and the full name of Kohlberg was Lawrence Kohlberg. Now, Kohlberg theory of moral development focuses on how children develop morality and moral reasoning. That how they develop that some moral values. चोरी करना पाप है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए. सो कैसे ये मोरालिटी डेवलप होती है, कैसे मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है, दिस इज व्हाट कॉलबर्ग हैज डिस्कस्ड इन हिज थ्योरी. And Kohlberg has developed the theory of moral development, and he gave 6 stages. He identified that moral development takes place in 6 stages. So Kohlberg's theory suggests moral development occurs in a series of 6 stages, and that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining justice. Now, there is one Hans dilemma which Kohlberg has quoted. Kohlberg asks a series of questions in this situation. There was one Hans, which is this situation is known as Hans dilemma. So Hans' wife was dying from a particular type of cancer. Now doctors said a new drug might save her. The drug had been discovered by a local chemist, and Hans tried desperately to buy some, but the chemist was charging 10 times the money it cost to make the drug, and Hans could not afford it. So Hans tried to raise money from somewhere, but he could raise only half the money. He explained to the chemist that his wife was dying and asked that, can you give me the drug cheaper, or will you allow me to pay the rest of the money later? But the chemist refused, saying that he had discovered the drug and was going to make money from it. Hans was a desperate husband who wanted to save his wife. So that night he broke into the chemist and stole the drug. Okay, so I'll repeat the story that there was a Hans, और उसकी बीवी जो थी उसको कैंसर था, और डॉक्टर ने बोला कि एक नई ड्रग मार्केट में आई है और वो ड्रग जो है, वो दवाई जो है आपकी बीवी को बचा सकती है. सो हैंस जो है उस केमिस्ट के पास गया और उसको बोला कि मुझे ये दवाई चाहिए. वो केमिस्ट जो है उस दवाई की 10 गुना कीमत मांग रहा था. जो भी उसकी लागत लगी थी उससे 10 गुना ज़्यादा वो मांग रहा था. हैंस के पास इतना पैसा नहीं था. हैंस उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम दे दो. वो कहता है नहीं, मैंने तो जो है पैसा कमाने के लिए ड्रग बनाई है और मैं तुम्हें नहीं दे सकता. हैंस कैसे करके थोड़ा बहुत पैसा जमा करता है, पर वो उतना जमा नहीं कर पाता है. तो वो वापस केमिस्ट के पास जाता है, कहता है कि इतना पैसा मेरे पास जमा है, तो क्या आप मुझे इतने में दवाई दे सकते हो, या फिर आप मुझे समय दे दो कि मैं बाकी का पैसा आपको चुका दूंगा. बट केमिस्ट जो है वो नहीं मानता और वो मना कर देता है. अब हैंस बड़ा परेशान है, बिकॉज उसको अपनी बीवी की जान बचानी है, और उस वक्त जो है उसको अपनी बीवी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं दिखता है, और वो उस रात केमिस्ट की दुकान में जाके चोरी कर लेता है और वो जो भी ड्रग है वो चुरा लेता है. अब क्या हैंस को चोरी करनी चाहिए थी? तो कॉलबर्ग ने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि शुड हैंस हैव स्टोलन द ड्रग? क्या उसे ड्रग चुराना चाहिए था? वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हैंस डिड नॉट लव हिज वाइफ? अगर वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता होता तो क्या सिचुएशन अलग होती? वॉट इफ द पर्सन डाइंग वॉज अ स्ट्रेंजर? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? अगर मरने वाला व्यक्ति उसकी बीवी ना होकर कोई और होता तो क्या तब भी हैंस जो है चोरी करता? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमन डाइज? अगर ये औरत मर जाती है तो क्या पुलिस को उसको मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार करना चाहिए? सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डायलेमा है. दैट क्या उसे चुराना चाहिए था,
कुछ लोगों का मानना है कि हाँ उसने जो किया सही किया, कुछ का मानना है कि नहीं, चोरी करना तो गुनाह है। सो ये एक डायलेमा है कि कैसे एक व्यक्ति को जो है बिहेव करना चाहिए, एंड हाउ अ पर्सन डेवलप्स, क्या वो थिंकिंग चलती है कि जब वो इस तरह का डिसीजन लेता है। सो जब कॉलबर्ग ने इन सारे सवालों का जवाब लिया लोगों से, तो उन्होंने उन जवाबों को एनालाइज किया। सो विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ द responses which he got from his subjects, he came to a conclusion कि there is a stage of moral development, और कॉलबर्ग ने फिर जो है 3 stages of moral development दिए। तो ये 3 बेसिकली 6 स्टेजेस, जिसको उन्होंने जो है 3 लेवल में डिवाइड किया। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, एंड लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके, सो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी again divided into stage 1 and 2, obedience and punishment, individualism and exchange. Conventional morality again into stage 3 and 4, developing good interpersonal relationships and maintaining social order. Post conventional morality stage 5, social contract and individual rights and universal principles. Now let us understand all these stages one by one. So the first level, that is level number 1, pre-conventional morality. Now this is the stage or level when the child begins to make judgments about what is right or wrong. 4 से 10 साल की उम्र में आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी आता है, बिटवीन द एज इज 4 to 10 years, एंड इस एज में बच्चा जो है सही और गलत का फायदा, अच्छा या बुरा का भेद जो है जानने लगता है। नाउ द स्टैंडर्ड बाय विच ही मेजर्स द मोरालिटी आर दोज ऑफ अदर्स। दैट मीन्स देयर इज अ स्टैंडर्ड, एक बना हुआ है मापदंड है कि ये सही है, ये गलत है, और वो जो है इज परसुएडेड टू टेक सच जजमेंट्स आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू अर्न रिवॉर्ड। तो यहाँ पे बच्चा जो भी डिसीजन लेता है सही या गलत का, वो आधारित है पनिशमेंट या रिवॉर्ड पे। अगर उसको पनिशमेंट मिलने वाला है तो डेट मीन्स उसके लिए वो गलत है, वो उस काम को नहीं करेगा। सो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी अगेन इज इनटू 2 स्टेज। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। At this stage, the child's morality is controlled by fear of punishment. तो यहाँ पे पेरेंट्स ने अपने लिए जो है घर के अंदर कुछ नए रूल्स बना रखे होते हैं, कुछ कायदे कानून बना रखे होते हैं, और ये सही है और ये गलत है। सो बच्चा यहाँ पे जो भी जजमेंट करता है वो इस बेस पे जजमेंट करता है कि क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा। सो अगर उसको लगता है कि ओबे करने से रिवॉर्ड मिलेगा या ये चीज़ करने से जो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो काम को नहीं करेगा। सो द चाइल्ड एज्यूम्स दैट पावरफुल अथॉरिटीज हैंड डाउन अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स एंड ही इज नॉट आस्क्ड टू क्वेश्चन देम और टू ओबे देम। सो घर में आपको जो है सब बड़ों को नमस्कार करना है तो वो नमस्कार करेगा। अगर उसको लगता है कि मैं अगर सही ढंग से अपना घर नहीं जमाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो उस काम को नहीं करेगा, तो उसके लिए वो गलत है। सो यहाँ पे सही और गलत या मोरालिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सो इज ओबेइंग बिकॉज ही विल बी रिवॉर्डेड, ही इज नॉट डूइंग दैट एक्ट बिकॉज ही विल बी पनिश्ड। सो नाउ इफ यू सी द हेंस डायलेमा, तो इस सिचुएशन में अगर आप इस लेवल के बच्चे को पूछोगे कि हैंस को क्या करना चाहिए, तो वो ये कहेगा कि हैंस को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ये सीखा है कि चोरी करना पाप है और चोरी करने से सजा मिलती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। सो ही इज नॉट थिंकिंग फर्दर,
वो आगे नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो डिसाइड करा कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जेल होगा, तो मुझे ये नहीं करना है. सो his morality is only to save himself from the punishment. So for him, stealing is bad because he will be punished. So that is the stage 1 where the decision or morality is governed by obedience and punishment. Second stage is individualism and exchange. Now at this stage of moral development, children begin to recognize that there is not just one right view. पहले तो क्या था, चोरी करना पाप है, वही सही है, सत्य वही है. बट नाउ ही रियलाइजेस दैट देयर कैन बी अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. वॉट एवर योर पेरेंट्स आर सेइंग, उसके अलावा भी एक पक्ष हो सकता है. सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. सो अगर हम हैंस का देखें एग्जाम्पल, सो सम माइट थिंक दैट इट इज़ राइट टू टेक द ड्रग. ओके, ड्रग ले लिया तो क्या हो गया, बिकॉज बीवी को बचाना है ना. और दूसरा सोचेगा कि क्यों ड्रग लेना है, बीवी को मरने दो, दूसरी बीवी मिल जाएगी, अभी तो आप जवान है, यू कैन गेट मैरिड अनदर टाइम. सो हियर एवरीथिंग इज रिलेटिव. सो नाउ ईच पर्सन इज फ्री टू परस्यू हिज और हर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मुझे क्या लगता है, मुझे एक्सचेंज में क्या मिलेगा. सो दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. एज एन इंडिविजुअल वॉट सर्व्स माई सेल्फ इंटरेस्ट, मेरे फ़ायदे में क्या है और मुझे बदले में एक्सचेंज में क्या मिलने वाला है. सो वन बॉय सेड दैट हैंस माइट स्टील द ड्रग इफ ही वांटेड हिज वाइफ टू लिव, बट दैट ही डजंट हैव टू इफ ही वांट्स टू मैरी समवन यंगर एंड बेटर लुकिंग. अगर उसको लगता है कि मुझे ये बीवी बहुत प्यार करती है और मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो चोरी करो. अगर उसको लगता है कि मुझे तो इससे भी अच्छी मिल सकती है, व्हाट इज़ योर सेल्फ इंटरेस्ट, what you can get in exchange, so let her die, why to steal for that. So in this way, the second stage of pre-moral or pre-conventional level, children's moral judgment is based on self-interest and consideration of what others can do for them in exchange or return. दूसरा मेरे लिए क्या करेगा. So here they value a thing because it has some practical utility for them. They obey the orders of their parents and elders and abide by some rules and regulations because it serves their interest. जब तक उनका इंटरेस्ट सर्व होता है वो उस रूल को फॉलो करेंगे. जिस दिन उसका इंटरेस्ट सर्व नहीं करेगा वो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे. अगर मेरे चोरी करने से कि तुम मुझे ये चोरी करके ला दो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो यू गो बाय दैट एक्सचेंज. सो दिस इज हाउ एट दिस स्टेज मोरालिटी वर्क्स. द सेकेंड लेवल इज कन्वेंशनल मोरालिटी, that is from 10 to 13 years. So यहाँ पे the children's moral judgment is controlled by likes and dislikes of others. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, what are the conventions, what are the rules, what are the regulations, what is the law and order which is maintained. Okay, so stealing, mercy killing, ये सब गलत है because it is considered wrong by the society by large and it is against the legal system. So that means you are following the conventional level of morality, what others think, what is largely accepted in the society. So again here we have stage 3 and stage 4, and the stage 3 talks about developing good interpersonal relationship. Developing good interpersonal relationships. Now here the child's moral judgment is based on the desire to obtain approval of others, and he wants to avoid being disliked by being declared a good or a good boy or a good girl. So now he wants to be liked. Everybody should call me a good boy. Everybody should call me a good girl. So now if we see who is a good person, according to Hans, the good person is who is saving his life. So he begins to judge the intentions and likes or dislikes of others and act accordingly. If I will do this, then I will be called as a bad girl. If I will do this, then I will be labeled as a good girl. So you are making the judgment on the basis of how people are going to view you. And at one stage, Kohlberg also has quoted the response of the subject.
okay, who was age of 30 days. He says it in the context of the hen's dilemma. It was really the druggist's fault. He was unfair, trying to overcharge and letting someone die. Haynes loved his wife and wanted to save her. I think anyone would. I don't think they would put him in jail. The judge would look at all sides and see that the druggist was charging too much. So here they are talking in terms of what is seen as right and what is seen as wrong and larger. So if you see that you want to be a good husband, so then to prove yourself to be a good husband, to develop that kind of relationship, that means for you morality is that yes, you should steal the drug because so that you can prove yourself as a good husband. So this is how at this stage morality works. Now stage 4 is maintaining social order. So if you see in the stage 3, you must have seen that sometimes the friend is doing some wrong things for his another friend, okay, because he wants to prove that I am a good friend, that you are not helping me, I need your help, please help me in copying. So the child helps him in cheating in the examination, because if he doesn't help him, then he is seen as a bad friend. But when it comes to stage 4, maintaining social order, so here the respondent becomes more broadly concerned with society as a whole, what the society thinks. So here the emphasis is on obeying laws, respecting authority, performing one's duty so that social order is maintained. So if everybody starts stealing, will the social order be maintained? Okay, so here many of the subjects, they responded to Hen's dilemma as that yes, theft is wrong. He should not have stolen the drug, because if everybody will behave like this, then there will be a chaos in the society and the society cannot function. So if we see that at stage 4, the moral decisions are taken based on the perspective of the society as a whole. समाज के हित में क्या है, उस बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं. So the children now follow the rules and regulations of society and take decisions about things being right or wrong with a view to avoiding censure by elders, authority of the social system. So you will not break the traffic rules because you have to maintain the social order. So this is about level 2 conventional morality. Level 3 is post conventional morality, जहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स की बात है. दिस इज आफ्टर एज 30 एंड दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ ट्रू मॉरलिटी, because here the controlling force is you yourself. Now making judgment is within you. You have certain principles. आपने अपने लिए कुछ principles लाइफ में बनाए हुए हैं और आप उन principles के ऊपर काम करते हैं. You do not bother about what others will think. You do not bother about the social order. You just think about what are my self-accepted moral principles. अगर मुझे लगता है समय पे आना चाहिए, समय पे जाना चाहिए, तो whatever rule says I will follow this. But reaching to this level is not an ordinary thing. So one may be able to attain it in the beginning or middle of his adolescence, or it may be postponed till the middle or laterhood. So it is not that easy that you achieve to this level. So this is the highest level of moral development, and it is characterized by social contract and individual rights and the universal principles. Social contract and individual rights. So at this stage, that is stage 5, the individual begins to ask what makes a good society. एक अच्छी सोसाइटी क्या है? And they basically believe that a good society is basically conceived as a social contract. ये एक social contract है जहाँ पे हम जो है freely अपना काम कर सकें, democratic procedures को follow कर सकें, and then let us decide
on our own what is right and what is wrong. So many of the respondents made it clear that they do not favor the breaking of laws. Okay, because if we will break the law, then society will not work. So they were against breaking the law and laws, because laws are social contract and we have agreed to it. We all have agreed to uphold certain democratic values. But at the same time, the wife's right to live is also a moral right and that should be protected. So now we fight for our own thing, that is, this mercy killing which has come. That if somebody is, going through some pain, then they should be allowed to go for mercy killing. And that's why we were fighting for that in the Supreme Court about the mercy killing and even about the abortion law. Because that an individual should be given that kind of right who is suffering. And we need to amend the law. So how long we are going to follow the same? So this is at the stage 5 where you are going beyond that convention. You are going beyond the convention. Like now we are talking about this live-in relationship. Okay. So we are saying, okay, if two individuals want to stay together, what is harm? Give the individual the right to stay together. Make it legalized. So this is how we are amending the laws when we achieve to this post-conventional morality. Stage 6 is universal principles. This is the highest stage or perfection achieved in terms of moral reasoning and development of morality. So here at this stage, the controlling forces for making moral judgment are highly internalized. Now the decision of the individual are based on his conscience. आप क्या सोचते हो? The belief in universal principles of respect, justice and equality, that everybody's concerns should be taken into consideration. So what is good for everybody? So act according to inner voice of the conscience, provide evidence for sharing, help people for defending them. So if you see that Kohlberg stage of moral development, it is clear that at this stage everybody, if we talk about the Hans dilemma, everybody will agree that yes, it was the right of the lady to live and it was very wrong from the part of view of the druggist to charge that high charge. And see, here everything is seen from a holistic point of view. Everybody's point of view is taken into consideration. So reaching this stage will essentially require that all parties, the druggist, the Hans and the wife, they should all try to view the things from others' perspectives for seeking justice and fair solution of the problem. So when we all together sit and see for the interest of all, rather than just seeing somebody's narrow interest. So here everybody has to sit together and think about the universal principles. What is good for everybody? So the druggist should also think that I should sacrifice this share of profit in the benefit of this person. So this is the highest level of morality which is developed at stage 6, and it is very difficult to reach to this level of morality development. So if we see the entire Kohlberg theory of morality development, then it is basically divided into 3 levels and 6 stages. Thank you.